हाँ बेटा, वन मोर यानी क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 7.2। डियर स्टूडेंट्स, इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको मैंने एक फार्मूला बताई, जिस फार्मूला को हम कहते हैं सेक्शन फार्मूला। यानी डियर स्टूडेंट्स, इफ यू हैव गिवन द एंड्स ऑफ ए लाइन सेगमेंट, let the ends of the line segment be A and B with coordinates x1, y1 and x2, y2. We take a point P between A and B. तो आपको मैंने बताया this point is known as point of division, and this point divides the given line segment in a given ratio. Let the ratio be m1 is to m2. तो फिर आपको मैंने बताया विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फार्मूला वी डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन। यानी ये जो पॉइंट ऑफ डिवीजन होता है, सेक्शन फार्मूला की हेल्प से वी डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। हियर द पॉइंट ऑफ डिवीजन इज P। ये जो इसका x कोऑर्डिनेट होता है दैट इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। और ये जो इसका y कोऑर्डिनेट होता है दैट इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया दिस फार्मूला इज नोन एज सेक्शन फार्मूला। With the help of section formula, we determine the coordinates of point of division. Now, what is the question? Question is find the coordinates of the point which divides the join of -1, 7 and 4, -3 in the ratio of 2:3. What we have to determine? We have to determine the coordinates of that point which divides the line segments whose coordinates are -1, 7 and 4, -3. Here the ratio is dear students 2:3. What we have to determine? We have to determine the coordinates of point of division. Let the required point, or we can say let the point of division be P, whose coordinates are x and y. Yani the x coordinate of point of division is, dear students, x, and the y coordinate is y. What we have to determine? We have to determine the coordinates of this point. हाँ बेटा, now by which formula we will use to determine the required result? Can we use the distance formula? No, because distance formula is used to determine the distance between two points. Simply we will use the section formula. First of all, we will check that the coordinates are correct or not. -1, 7, 4, -3, and the ratio is 2:3. Now, what is the procedure? Simply, dear students, we will use section formula. तो पहले स्टार्ट कहां से करेंगे? हम लिखेंगे लेट रिक्वायर्ड पॉइंट। ये जो रिक्वायर्ड पॉइंट है बी P, whose coordinates are x, y. By section formula, dear students, we know x coordinate is equal to m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2, and y coordinate is equal to m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2. Now we will substitute the values of m1, m2, x1, x2, and we will get the x coordinate of the point of division, yani point of division, that is point P.
अगर बेटा आप यहां देखोगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m1 दैट इज 2, यानी m1 का जो वैल्यू है दैट इज 2, और ये जो m2 का वैल्यू है दिस इज m1, दिस इज m2। तो डिस्टेंस फॉर्मूला में आपको मैंने पढ़ाया दिस इज x1, दिस इज x1, दिस इज y1, this is beta x2 and this is y2. Now what is the value of m1? Dear students, that's 2. What is the value of x2? What is the value of x2? That is 4 plus what is the value of m2? That is 3, that is 3, and what is the value of x1? That is minus 1. अपॉन में क्या लिखोगे? अपॉन में लिखना है dear students 2 plus 3. What is the value of m1? m1 का वैल्यू जो है that is 2 and the value of m2 is 5. Now we will simplify this. It becomes 4 to the 8. It becomes minus 3 upon 5 plus 2. It becomes, no beta, it's 2 plus 3, it is 5. And what we get 5 upon 5. 5 upon 5 is 5 upon 5. हाँ बेटा, यहां क्या करना है, यानी x कोऑर्डिनेट जो इसका है it becomes 8 minus 3, that is 5 upon 5, and it becomes 1. Now we'll determine the y coordinate of the point of division. What is the value of m1? Dear students, value of m1 that is 2, that is 2 into what is the value of y2? What is the value of y2? y2 का जो वैल्यू है बेटा that is minus 3, बीच में आएगा प्लस what is the value of m2? that is 3, and what is the value of y1? y1 का जो वैल्यू है y1 that is dear students 7 upon 2 plus 3. अब इसको सिंपलीफाई करना है. What it becomes? It becomes minus 6. 3 into 2 that is minus 6. बीच में आएगा प्लस 21. अपॉन में क्या आएगा? अपॉन में आएगा dear students 5. What we get? We get minus 15 upon 5. When we simplify this, what we will get? It becomes dear students plus 5 plus 15. It is not minus 15. We get 3. तो हम लिखेंगे लास्ट में, यानी ये जो रिक्वायर्ड पॉइंट है, यानी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द रिक्वायर्ड पॉइंट दैट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन, और एक्स कोऑर्डिनेट जो इसका आया वो आया डियर स्टूडेंट्स 1 एंड द वाई कोऑर्डिनेट इज 3. तो बेटा ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 7.2 ये हुआ कंप्लीट.